The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Victor Hugo famously said, "Peace is the virtue of civilization. War is its crime." Good afternoon, everyone. I, Sufia Mirza, And I am as Divishri. welcome you all. SPARC, the Student Council of DME Media School, believes in observing good faith and justice toward all nations, races, gender, and other social, geopolitical background. We aim to cultivate peace and harmony in our actions and thoughts. I request Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, to address the gathering. Uh, Thank you, Sophia. So we have gathered here today for a specific purpose, and that is to condemn the war that has erupted in the eastern part of the world in Ukraine. So this is a war which was unimaginable in the sense that in the 21st century, we all used to believe that now this is the time if there is a war, then could be the information warfare, the way the technology has grown up. And the way we are using the digital technology, so with the help of this, any kind of war is possible through various means. If it happens, maybe the misinformation campaign or the kind of propaganda that normally countries conduct against other countries and all. But nobody had ever imagined that this kind of conventional warfare will happen in 2022. But everybody has proved wrong. The war is already there. And now perhaps today is the 8th day and there is no sign that the war is going to end shortly. Already a lot of damages have happened and many more damages are in waiting. The loss of human lives, the loss of property is happening. And war is some such thing which has a very lasting impact, the adverse impact, obviously, which is there for decades, which is there for centuries. Like if we take the example as to what happened in Japan in the Second World War, when this nuclear war happened, the atomic bomb was dropped by the US on Japan. And the whole area, the Nagasaki and Hiroshima, that's affected even today. That might be affected even after 50 years, even after 100 years or so. So the loss that happens, it is irreparable. So nobody should support war for whatever purpose it happens. There might be different kind of reasons. The equilibrium which is shattered globally between one pole and another pole, and everybody was hoping that since the time the USSR got disintegrated and this whole bipolar world turned into the unipolar world, the Cold War period came to an end. So everybody was of the impression that now there will be no war. Because the kind of confrontation which used to be there between the Cold War period, even, I mean, if we look back and look back at the Cold War period today, we try to make an assessment, then I was thinking even only today that even the Cold War period was good in the sense that a balance of power was maintained for about 50 years or so. Now that is all shattered. In the unipolar world, if one is still tries to dominate, is not satisfied with the kind of might, with the kind of power that it has acquired, and if any other country wants to give a challenge
to that power. So obviously this kind of things are bound to happen. Second World War happened because of the First World War. And because of the kind of humiliation that Germany suffered. So they tried to avenge that, and the Second World War happened. Again, the same kind of situation is there. In the sense that the all NATO powers, they tried to sideline Russia. And all kind of tricks were played against Russia till the point that Russia had to think that if they have to survive and they have to maintain their position, their status in world, then they have to confront for that. And that is how this whole war has happened. But whatever might be the reasons, we can never support war. Because and then losses of varied kind here in this war, everybody is suffering. The Ukraine is suffering, the Russia is suffering, the common people suffers. Those who sacrifice their life for no reason, they suffer, their family members suffer, and also the people who are not at all part of the war, the people who do not support war, even they suffer, because the kind of economic sanctions which have been imposed on Russia, who will suffer? The people of Russia will suffer. The economic hardships will be faced by the people. So ultimately people will suffer, whether the people of Russia, whether the people of Ukraine, whether the people of the neighboring countries, the Poland or Romania or even far out, even we will suffer. We will suffer, though we do not have, India is not having any direct connection, except that our students are studying there. But then a lot of students are already caught up in Kharkiv, and it's difficult to evacuate those students from there. So they will suffer, their family members will suffer, and we will also suffer in terms of the rising crude oil prices, which is estimated maybe reaching somewhere $150 or so. So this means that this 100 rupees petrol will go to 160, 170 rupees petrol. So each one of us will pay for that. The gas will, the LPG and all, the liquid gas, their prices will go up. Overall price rise will happen. The development process will get a setback. And then this is not the case of India alone. So many countries, developing countries of the developing world, they are going to suffer. So we believe in DME Media School that we should condemn the war, and as an academic fraternity, this is the thing that we should initiate and we can do. Obviously, there can be no direct impact on what is happening on the war front or what is happening in that part of the world. But then public opinions matter. If there is a cry for peace, whether within Ukraine or within Russia, a lot of such voices are being raised. Even in the US, a lot of voices are being raised for peace, against war. So if these voices get together all over the world, then it is bound to make an impact. And the impact can be seen in various forms. There could be pressure on the varying factions that they have to stop war. And if this happens, nothing can be more good than this. So we should at least try to deliberate on this. We should at least try to discuss this, and we should be collectively condemning the war, and we should try to mobilize the people in support of peace and against the war, and should try to muster more and more opinion for peace and against war. That is all I wanted to say in this session. Thank you. Thank you, sir. Our teachers are the guiding force for us. I now request a few faculty members to deliberate on peace. I would like to first invite Mr. Sachin Nair, Assistant Professor, DME Media School, to share a poem with us. Thank you so much, Devashri. Good afternoon to all the students, my colleagues, and everyone who has joined here today. So we are here deliberating on peace and war while our news channels are covering it and we are all seeing it live. I want to today read a very famous poem of Wilfred Owen. It's one of the most famous war poems ever written. Often in war, we speak of peace, we speak of valor, we speak of courage.
हम मौत को सेलिब्रेट करते हैं, हम कहते हैं ये गर्व की बात है कि हम मर रहे हैं, ये गर्व की बात है कि हमने जान बलिदान में दे दिया है. So Wilfred Owen, who was also a soldier before he became a poet, wrote about a war from the war field, the experience. कविता का नाम है Dulce et decorum est. ये एक लैटिन फ्रेज है. फेमस लैटिन कवि होरेस ने ये चीज कही थी, इट इज स्वीट एंड फिटिंग टू डाई फॉर वंस कंट्री. विल्फ्रेड ओवन इसी बात में एक व्यंग ढूंढते हुए इस बात के आयरनी को दर्शाते हैं कि जब कहते हैं हम कि मरना भी स्वीट, he wants to show us what exactly happens in a battlefield. So I would like to recite this poem for all of you and remember this and stand with all the people who have lost their lives, who are stuck in the battle, whether they are the ones fighting or the ones that are being killed. Dulce et decorum est by Wilfred Owen. Bend double like old beggars under sacks, knock-kneed, cuffing like hags, we cursed through sludge. Till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep. Many had lost their boots, but limped on, bloodshot. All went lame, all blind. Drunk with fatigue, deaf even to the hoots of gas shells dropping softly behind. Gas! Gas! Quick, boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime, dim through the misty panes and thick green light. As under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams you too could pace, behind the wagon we flung him in and watched the white eyes writhing in his face. His hanging face like a devil sick of sin, if you could hear at every jolt the blood come gargling from the fourth corrupted lungs. Obscene as cancer, bitter as scud, of vile incurable sores on innocent tongues. My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Thank you, everyone. Over to you, Divishri. Thank you, sir. Students of DME Media School engaged in poster-making competition and with their art illustrated the message of peace. I now request the technical team to showcase the entries of selected participants. This is the art illustrated by Gamkor from semester 1. This is the art illustrated by Riyanshu Tejasvi, semester 1. This is the artwork by Sajal Mishra from semester 1. It is by Kashish Ahuja from semester 1. This is the artwork illustrated by Chandan Kumar from semester 1. This is by Aditya Jain from semester 1. Now I would like to call Mr. Vishal Sahai, Assistant Professor, DME Media School, to address the gathering. Thank you, Sophia. India is a land of Gautam Buddha. For human beings, there is nothing more important than peace. Peace with nature, peace with other human beings, and the peace with own self. Peace is the key to success, to good life, and to fulfillment. And war is the antithesis or opposite or the destroyer of the peace. It causes gestation and misery and inflict long-lasting pain. What is the most ironic in the fact that only a few powerful people decided to go for a war? Lakhs
lakhs of the most poor common people suffer the most. In any international dispute, none of the parties can be held completely right or completely wrong. But going for a war to settle any issue is completely wrong. As even after war, the parties have to sit together for negotiation with or without mediation. Opting the war is highly irrational. The present crisis between Russia and the Ukraine could have been tackled with the help of well-meaning friends of both the parties. Unfortunately, several countries have actually what is called fanned it and fueled it. नमक में घी मिर्च का काम करना. The crisis which has caused war. Thank you very much. Thank you, sir. Society has arisen out of the work of peace. The essence of society is peacemaking. Peace and not war is the father of all things. We have amongst us Priya Mishra, student of DME Media School from second year, of member of SPARC, to share her thoughts on the topic. A very good afternoon to one and all present here. मेरा नाम प्रिया मिश्रा है. आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं उसके ऊपर कुछ कहूं, मैं सबसे पहले आपके सामने एक एस्टिमेटेड नंबर्स रखना चाहती हूं. 2003 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में बताया गया कि 2003 तक हमने 150 मिलियन से 1 बिलियन तक लोगों की जान दांव पर लगाई है या फिर उनकी मृत्यु का कारण ये युद्ध बना है, वॉर. ये सुनने के बाद एक सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है कि आखिर इन सब से हमने पाया क्या? इतनी बड़ी कीमत जो हमने चुकाई है, इससे हमें मिला क्या है? यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया. मैंने ढूंढा. लोग कहते हैं कि युद्ध से हमें कुछ मिलता है या फिर हम कुछ खोते हैं. मुझे लगता है कि हमने युद्ध से बहुत कुछ पाया है और ये हमारा पूरा विश्व जानता है कि हमने क्या पाया है. जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि एक युद्ध समाप्त हो जाता है और उसके साथ सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो हम गलत हैं. जब एक युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद जो जिंदगियां हैं और जो भविष्य में आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं, वो उस सर्वनाश को भुगतते हैं और देखते हैं. ये शब्द आपको बड़े जरूर लग रहे होंगे, लेकिन जो लोग इसको भुगतते हैं वो इसे जानते हैं. एक वॉर के बाद नेशनल सिटीजन्स रिफ्यूजीज में बदल जाते हैं. एक वॉर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कई साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स लेकर आता है. अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की, तो फियर, इनसिक्योरिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, न जाने और कितनी चीजें जो लोगों को आगे तक परेशान करती हैं. शायद गिनते समय हम ये देखते हैं कि वॉर के दौरान कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स की वजह से लोग मरते हैं, उन्हें गिना भी नहीं जाता और ना देखा और पूछा जाता है. रिफ्यूजीज की बात करें तो शायद हमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता. हमने कितनी नजदीक से लोगों को बढ़ते और घरों को टूटते हुए देखा है. सिर्फ वर्तमान नहीं, हम युद्ध की वजह से अपने भविष्य को भी खत्म करते हुए जा रहे हैं. जहां एक तरफ विश्व COP26 जैसे इनिशिएटिव ले रहा है क्लाइमेट चेंज को एक सही तरीके से देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ हम ऑयल, मिसाइल्स, लैंड माइंस, केमिकल्स, इन सब का यूज करके खुद अपना भविष्य खत्म करते जा रहे हैं. अगर हमारे लीडर्स या फिर वो लोग जो युद्ध का आगाज करने वाले हैं, अगर वो लोगों की जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो उनकी जान को दांव पर लगाएं. वॉर से ना कभी कोई मसला हल हुआ है और ना कभी होगा. ये सब जानने के बाद भी अगर हम ये चीज कर रहे हैं, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने भविष्य को कहां पर ले जा रहे हैं. हम युद्ध का विरोध करते हैं. We condemn war. Thank you. Thank you, Priya. Now I would like to call S. Vikram Arun, Assistant Professor, DME Media School, to address the gathering. Thank you, Sophia. Since we are struggling for peace, this struggle for peace is incomplete if we do not discuss the history of these wars which we are condemning. So I'm going to present a poem by Emmanuel Ortiz
This poem is originally in English, but I will be presenting a Hindi translation of this poem, which has been done by Asad Zaidi. The name of the original poem is A Moment of Silence, जिसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में 1 मिनट का मौन। इससे पहले कि मैं यह कविता पढ़ना शुरू करूं, मेरी गुजारिश है कि हम सब 1 मिनट का मौन रखें। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में मरे लोगों की याद में, और फिर 1 मिनट का मौन उन सब के लिए जिन्हें प्रतिशोध में सताया गया, कैद किया गया, जो लापता हो गए, जिन्हें यातनाएं दी गईं, जिनके साथ बलात्कार हुए। 1 मिनट का मौन अफगानिस्तान के मजलूमों और अमरीकी मजलूमों के लिए, और अगर आप इजाजत दें तो एक पूरे दिन का मौन हजारों फिलिस्तीनियों के लिए, जिन्हें उनके वतन पर दशकों से काबिज इजरायली फौजों ने अमरीकी सरपरस्ती में मार डाला। 6 महीने का मौन उन 15 लाख इराकियों के लिए, उन इराकी बच्चों के लिए जिन्हें मार डाला 11 साल लंबी घेराबंदी, भूख और अमरीकी बमबारी ने। इससे पहले कि मैं यह कविता शुरू करूं, 2 महीने का मौन दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए, जिन्हें नस्लवादी शासन ने अपने ही मुल्क में अजनबी बना दिया। 9 महीने का मौन हिरोशिमा और नागासाकी के मृतकों के लिए, जहां मौत बरसी, चमड़ी, जमीन, फौलाद और कंक्रीट की हर परत को उधेड़ती हुई, जहां बचे रह गए लोग इस तरह चलते फिरते रहे जैसे कि जिंदा हों। 1 साल का मौन वियतनाम के लाखों मुर्दों के लिए, कि वियतनाम किसी जंग का नाम नहीं, एक मुल्क का नाम है। 1 साल का मौन कंबोडिया और लाओस के मृतकों के लिए, जो एक गुप्त युद्ध का शिकार थे। और जरा धीरे बोलिए, हम नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि वे मर चुके हैं। 2 महीने का मौन कोलंबिया के दीर्घकालीन मृतकों के लिए, जिनके नाम उनकी लाशों की तरह जमा होते रहे, फिर गुम हो गए और जबान से उतर गए। इससे पहले कि मैं यह कविता शुरू करूं, 1 घंटे का मौन एल सल्वाडोर के लिए, 1 दोपहर भर का मौन निकारागुआ के लिए, 2 दिन का मौन ग्वातेमाला वासियों के लिए, जिन्हें अपनी जिंदगी में चैन की एक घड़ी नसीब नहीं हुई। 45 सेकंड का मौन आकतियाल चियापास में मरे 45 लोगों के लिए, और 25 साल का मौन उन करोड़ों गुलाम अफ्रीकियों के लिए, जिनकी कब्रें समुंदर में हैं इतनी गहरी जितनी ऊंची कोई गगनचुंबी इमारत भी ना होगी। उनकी पहचान के लिए कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा, दंत चिकित्सा के रिकॉर्ड नहीं खोले जाएंगे। उन अश्वेतों के लिए जिनकी लाशें गूलर के पेड़ों से झूलती थीं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। 1 सदी का मौन यहीं इसी अमेरिका महाद्वीप के करोड़ों मूल बाशिंदों के लिए, जिनकी जमीनें और जिंदगियां उनसे छीन ली गईं। पिक्चर पोस्टकार्ड से मनोरम खित्तों में, जैसे पाइन रेज, वुंडेड नी, सैंड क्रीक, फॉलन टिम्बर्स या ट्रेल ऑफ टीयर्स। अब ये नाम हमारी चेतना के फ्रिजों पर चिपकी चुंबकीय काव्य पंक्तियां भर हैं। तो आपको चाहिए खामोशी का एक लम्हा, जबकि हम बेआवाज हैं। हमारे मुंह से खींच ली गई हैं जबानें, हमारी आंखें सी दी गई हैं। खामोशी का एक लम्हा, जबकि सारे कवि दफनाए जा चुके हैं, मिट्टी हो चुके हैं सारे ढोल। इससे पहले कि मैं यह कविता शुरू करूं, आप चाहते हैं एक लम्हे का मौन। आपको गम है कि यह दुनिया अब शायद पहले जैसी नहीं रह जाएगी। इधर हम सब चाहते हैं कि यह पहले जैसी हरगिज न रहे, कम से कम वैसी जैसी यह अब तक चली आई है। क्योंकि यह कविता 9/11 के बारे में नहीं है, यह 9/10 के बारे में है, 9/9 के बारे में है, 9/8 और 9/7 के बारे में है। यह कविता 1492 के बारे में है। यह कविता उन चीजों के बारे में है जो ऐसी कविता का कारण बनती हैं। और अगर यह कविता 9/11 के बारे में है, तो फिर यह सितंबर 10, 1971 के चिली देश के बारे में है। यह सितंबर 12, 1977 दक्षिण अफ्रीका और स्टीवन बीको के बारे में है। यह 13 सितंबर 1971 और एटिका जेल न्यूयॉर्क में बंद हमारे भाइयों के बारे में है। यह कविता सोमालिया सितंबर 14, 1992 के बारे में है। यह कविता हर उस तारीख के बारे में है जो धुल पुछ रही है और मिट जाया करती है। यह कविता उन 110 कहानियों के बारे में है जो कभी कही नहीं गईं। 110 कहानियां इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में, जिनका कोई जिक्र नहीं पाया जाता।
जिनके लिए CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूज वीक में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। यह कविता इस कार्यक्रम में रुकावट डालने के लिए है। आपको फिर भी अपने मृतकों की याद में एक लम्हे का मौन चाहिए, हम आपको दे सकते हैं जीवन भर का खालीपन, बिना निशान की कब्रें, हमेशा के लिए खो चुकी भाषाएं, जड़ों से उखड़े दरख्त, जड़ों से उखड़े हुए इतिहास, अनाम बच्चों के चेहरे से झांकती मुर्दा टकटकी। इस कविता को शुरू करने से पहले हम हमेशा के लिए खामोश हो सकते हैं, या इतनी कि हम धूल से ढक जाएं, फिर भी आप चाहेंगे कि हमारी ओर से कुछ और मौन। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो रोक दो तेल के पंप, बंद कर दो इंजन और टेलीविजन, डुबा दो समुद्री सैर वाले जहाज, फोड़ दो अपने स्टॉक मार्केट, बुझा दो ये तमाम रंगीन बत्तियां, डिलीट कर दो सारे इंस्टेंट मैसेज, उतार दो पटरियों से अपनी रेलें और लाइट रेल ट्रांजिट। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो टैंकों बैल की खिड़की पर ईंट मारो और वहां के मजदूरों का खोया हुआ वेतन वापस दो, ध्वस्त कर दो तमाम शराब की दुकानें, सारे के सारे टाउन हाउस, व्हाइट हाउस, जेल हाउस, पेंट हाउस और प्ले बॉय। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो रहो मौन सुपर बॉल इतवार के दिन, 4 जुलाई के रोज, डेटन की विराट 13 घंटे वाली सेल के दिन, या अगले दफे जब आप कमरे में हमारी हंसी लोग जमा हों और आपका गोरा अपराध बोध आपको सताने लगे। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो अभी है वह लम्हा इस कविता के शुरू होने से पहले। शुक्रिया। Thank you, sir. The thought of SPARC and DME Media School echoes in the quote by Dwight D. Eisenhower. I like to believe that people in the long run are going to do more to promote peace than our governments. Indeed, I think that people want peace so much that one of these days governments had better get out of the way and let them have it. Now we have a poetry by Yash Joshi and Gauri Saxena. Hello everyone, I, Gauri Saxena, student of first year BGMC. I feel extremely happy that I have been given this opportunity of reciting the poem titled Keeping Quiet by Pablo Neruda, a Chilean poet. The poetry revolves around the theme of necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So friends, ladies and gentlemen, here goes the poetry. Now, we will all count to 12 and we will all keep still. For once, on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm waves, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. Those who prepare a green war with gas, war with fire, victories with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to drunk with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could not do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Thank you. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to human beings, animals, and the environment. He suggests that in the order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. Hello everyone, I am Yash Joshi, a student of first year BJMC. I feel to obtain that I have been given the opportunity to say a few words or thought on art. There is a no must in art
because art is free. Life beats down and crushes the soul, and art reminds you that you have won. A beautiful body, precise, but a work of art dies not. The aims of the art is not to represent the outward appearance of things, but their inward significances. These are the words of Vasily Kandinsky, a Russian painter, Stella Adler, an American actor, Leonardo da Vinci, a famous polymath of Italy, and at last, one more famous personality, Aristotle, a Greek philosopher and polymath. Thank you. Thank you so much. Now I would like to call Mr. Pramod Kumar Pandey, Assistant Professor, DME Media School, to address the gathering. थैंक यू वेरी मच दिव्यश्री। सभी लोगों ने इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियां अभी तक दी हैं, जिस तरह की कविताएं अभी सचिन सर ने और अरुण सर ने पढ़ी हैं, उसके बाद मेरे पास अब शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉर कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। हमारे पास इसके कई सारे उदाहरण मौजूद हैं कि वॉर अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है। अगर हम अपने ही इतिहास में देखें तो 1947 से लेके आज 2022 तक इंडिया कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व रहा, कई सारे जंग इंडिया ने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ लड़े, और उसके बाद जो मंजर जो हमने देखा, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हमने देखा, जिस तरह के परिवारों को बर्बाद होते हमने देखा, जिस तरह से माओ को रोते हुए देखा, जिस तरह से बच्चों को अनाथ होते हुए देखा, तो ये जो चीज है, ये वॉर के जो एक एक्साइटमेंट जो अभी हमें मीडिया में दिखाई दे रही है और जिस तरह का पागलपन पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये तब समझ आएगा जब वॉर खत्म होगी और जब उसके जो कुप्रभाव और जो उसके कुपरिणाम हैं, जब वो हमारे सामने आएंगे। तो और हम गांधी के एक भारत से आते हैं जहां पे अहिंसा ही हमारा रास्ता है, हिंसा के लिए हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। और गांधी जी का जो विचार थे वो आज भी पूरी दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं, इस पूरी परिस्थिति ने हमें दिखा दिया। मीडिया में रोज बम गिरते हुए, रोती हुई औरतें, रोते हुए बच्चे, रोते हुए सैनिक, पड़े हुए शव जब हम देखते हैं तो जो दिल दहलता है, उसको हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मैं कोई कविता मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे को ऐसी कोई कविता याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ इस बात को देखते हुए कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हम अपने पूरे जोर के साथ हम इस पूरे वॉर को हम कंडेम करते हैं। वॉर विकल्प नहीं है और ऐसा कोई भी जो वॉर को समर्थन करता है वो एक तरह से मानवता के खिलाफ है। और हम पूरी तरीके से इस पूरे मामले में, चाहे हमारे राजनीतिक विचार जो भी हों, लेकिन हम किसी भी कीमत पे इस तरह की हिंसा को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड वी कंडेम वॉर with a whole heart. Thank you. Thank you, sir. I would now request Dr. Manasvi Maheshwari, Associate Professor, DME Media School, to share the resolution condemning war. Thank you, Sophia. We condemn war. This is a resolution by the teachers of DME Media School and the members of Students' Council SPARC. At the tail end of one of the most devastating wars the world had ever seen, countries and cultures pledged to move towards a better world. But today, in the 22nd year of 21st century, we are in amidst of another war in the eastern part of Europe. We, the students and teachers of DME Media School and the members of SPARC, Student Council of DME Media School, condemn the situation that have led us here and lament the conditions of every individual stuck in this conflict. We stand in solidarity with every citizen of the world who wishes for peace and is willing to work for it. One of the many roles of an educational institution is to reorient the world to lesson from history and to form insights for the future. As an institute practicing and teaching media, we have always sought to examine and redefine the dominant socio-political discourse. It is our responsibility to create informed, aware, and enlightened individuals who are determined to create a better future. We hereby call upon
all the stakeholders of the world of tomorrow to join hands and move beyond the partisan, sectarian, and geopolitical walls. We must join hands to engage and understand all the iterations of new epoch being created in the image of parochial worldview. DME Media School celebrates the spirit of humanity and the idea of peace and calls forth everyone to use their expertise to craft a defense for free, fair, and egalitarian world. Thank you. Thank you, ma'am. With this, we come to the end of today's program. I invite Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to give concluding remarks. Thank you, Sophia. सभी ने अपनी अपनी भाषा और विचारों के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को रखा, जो बहुत ही इमोशनल है। और वाकई में वॉर, अगर आप बहुत सीरियसली देखते हैं तो वॉर से हमें सिर्फ तकलीफ होती है। पोस्टर के माध्यम से जो स्टूडेंट ने प्रस्तुत किया बहुत अपीलिंग लगा, क्योंकि इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी पोस्टर्स बना के प्रेजेंट किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉर में सिर्फ लॉस होता है, लॉस किसी तरह का भी हो, ह्यूमन लाइफ, एनिमल, नेचर, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री या किसी भी तरह का, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में पड़ता है, डिफरेंट कंट्रीज में पड़ता है और क्राइसिस सिचुएशन का सबको सामना करना पड़ता है। ये इसको इस तरह से समझना चाहिए कि उसको वापस आने में बनाना शायद आसान है, लेकिन उसको बिगाड़ने में क्षण लगते हैं और वो वापस आने में सालों लग जाते हैं। अभी इस समय वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो रशिया एंड यूक्रेन दोनों ही सफर हैं। वो अगर आपसी बातचीत के साथ इसको रिजॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे का पार्ट थे। इन सब चीजों को अगर हम बहुत बारीकी से नजर डालें तो ये केवल प्रवोक होने की वजह से ये हुआ, अदरवाइज शायद ना होता। क्योंकि नेबरिंग कंट्री अगर सफर कर रहे हैं केवल इस वॉर की वजह से, तो वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंट्री को डेवलप करने में, एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। न्यूज चैनल भी बहुत तरह के फेक न्यूज चला रहे हैं, जो हम सभी जानते हैं। इस तरह के वॉर्स में आप कम से कम 100-200 इयर्स पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपकी सॉइल खत्म हो गई, आपकी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, आपका नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए, आपका एनवायरनमेंट सारा खत्म हो गया। जो भी हमने कम से कम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोगों को पता है, चाहे कोई ट्रेजेडी हो, किसी तरह का त्रासदी हो जाती है या वॉर की बात करें, तो हमने बहुत कुछ खोया है। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से बहुत सारी चीजों को बताया, उन सबको यहाँ डिस्कस नहीं करते हुए भी मैं यही कहूंगी कि वॉर बहुत हार्मफुल है सभी के लिए। इसमें केवल और केवल नुकसान होता है, हम अचीव कुछ नहीं करते हैं। हम इसको आपसी विचार विमर्श से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वॉर सिर्फ बर्बादी का जरिया है, भविष्य को बनाने या सुधारने का नहीं है। क्या हमने इन वॉर्स में पाया है और क्या खोया है, ये इसको अगर हम रिसर्च करने बैठे तो हमें सालों लग जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ खोया है इन वॉर्स के जरिए। So we condemn war. We need peace, love. We want to see a smile on those faces जो वाकई में डरे हुए हैं, अपना सब कुछ खो चुके हैं, बिलख रहे हैं, अपनों तक पहुंच नहीं रहे हैं, अपने उनके कटी फटी लाशों की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो उनको उनके भविष्य की कामना, उनको जो भी हम उनके लिए सुधार चाह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं, हम उनको हेल्प केवल इमोशनली कर सकते हैं,
हम उनसे इमोशनली अटैच हो सकते हैं। आमीन। Thank you, ma'am. War is neither glamorous nor attractive. It is monstrous. Its very nature is one of tragedy and suffering. With the hope that peace will prevail, we come to the end of today's program. I thank Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, for their constant support and guidance. I would like to call Mr. Amrish Saxena, Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, to give his concluding remarks. तो मैं कह रहा हूँ जितनी तरह की चीज़ें अभी कही गई सभी ने बहुत ही सारगर्भित बहुत ही डेप्थ में जाके which was actually the need of the hour and that was the spirit of the program, the kind of expressions which were made. So many points were recited, so it reminded me of a very great poem and very great poet, Sahil Ludhianvi. So I thought that's most appropriate and apt thing which can be said in today's time. तो साहिल लुधियानवी ने जंग के बारे में बहुत ही खूबसूरत लाइंस लिखी हैं which are always quoted. So a few of those lines I would like to recite here. खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर. जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर. बम घरों पर गिरे की सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है. खेत अपने जलें कि औरों के, जीस्त फाकों में तिल मिलाती है. टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है. फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है. जंग तो खुद ही एक मसला है. जैसे कि हमने देखा कि रूस और यूक्रेन अपने मसले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जंग के माध्यम से, तो साहिर का कहना है कि जंग तो खुद ही एक मसला है. जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी. इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है. आप और हम सभी के आंगन में शम्न जलती रहे तो बेहतर है. बस इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. Thank you, sir. With this, I come towards the end of the session. I extend my gratitude to Mr. Sachin Nair, Dr. Manasvi Maheshwari, Mr. Vikram Arun Kumar, Mr. Vishal Sahai, and Mr. Pramod Kumar Pandey for sharing their thoughts with us. I also thank Yash Joshi, Gauri Saxena, and Priya Mishra, SPARC members. I would also like to extend my gratitude to Ms. Mudita Raj and Ms. Shruti V.S., Assistant Professor and SPARC Faculty Facilitators, Shreya Jha and Shruti Pandey, Student Conveners of SPARC. Last but not the least, my gratitude to all the participants and audience for joining us today. Now I am Ms. Divishri, along with Sufia Mirza, take your leave today. Thank you, everyone. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.